नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। कभी कभी अपनी शक्ल भी दिखा लिया करो बेटी, अच्छा लगता है। जी सर। नमस्ते। आप सभी का स्वागत सायंकालीन सत्र में। सायंकालीन वंदना, अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना। योऽसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे हि सकारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामो साधुनो भन्ते भगवा शुचिर्परिनिप्पुतोऽपि पश्चिमाजनितानुकम्पमानसा इमे सकारे दुःखत्पन्नाकारभूते पटिगणहातु अम्हाकं दीनरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो पुपभागनमधारं करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, अनित्यता का विवेचन। अन्धमयं अनिच्छानुसति पाठं बढ़ामसे आए हम अनित्य अनुस्मरण का पाठ करें। सब्बे संखारा अनिच्चा सब्बे संखारा दुखा सब्बे धम्मा अनात्ता। सभी संस्कृत बनी हुई चीजें अनित्य है, सभी संस्कृत बनी हुई चीजें दुख है, सभी धर्म अनात्म है। अद्ध्रुवं जीवितं ध्रुवं मरणम् अवश्यं मया मरितव्यं मरणपर्यवसानं मे जीवितं जीवितं मे अनियतं मरणं मे नियतम्। जीवन अनिश्चित है, मृत्यु अटल है, मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। मेरे जीवन का अंत मृत्यु ही है, मेरा जीवन अनिश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। वच अयं कायो
अचिरं अपेत विज्ञानो शुद्धो अधिशेषति पटविं कलिंगरं इव निरर्थम्। अवश्य ही यह शरीर शीघ्र ही चेतना विहीन हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा, पृथ्वी पर पड़ा होगा, सड़े हुए लकड़ी के लट्ठे की भांति बेकार। अनिच्छावत संखारा उपादिवयधन्यो उपजित्वा निरुच्छन्ति तेषं भूतसमो सुखो। सभी संस्कृत बनी हुई चीजें वास्तव में अनित्य हैं। उत्पन्न होना तथा व्यय होना इनका स्वभाव है। उत्पन्न होकर वे निरुद्ध हो जाती हैं। इनका उपशमन सुखकारी है। अब हम सूत्र का पाठ करेंगे। सूत्र का नाम है सम्मस्य सूत्र, सेल्फ एग्जामिनेशन। सर ने मुझे बताना सर चाहूंगा। वुड यू लाइक टू से? यस। हाँ, थोड़ा सा कह देता हूँ, तुम लगा दो जरा, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। आज I was looking at some things which might be relevant for us from the Tipitaka. तो ये एक सूत्र मिला, मैंने पहले नहीं पढ़ा था, सम्मस्य सूत्र। And interestingly, this answers that question which you often ask, कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। We all often say that, ना, you should reflect upon. हम भी कहते हैं कि अच्छा, when you experience suffering, then you should sit with it and keep quiet and let the truth emerge. That is one way of looking at the natural process. The other is that when we find out the issues which are happening, what are the kind of reflections we should do so as to increase our awareness and eventually result in cessation of suffering. So इस सूत्र में भगवान ने खुद ही काफी उसको अच्छी तरह से समझाया है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सबके साथ शेयर करना अच्छा रहेगा, बिकॉज हम भी वही कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने संस्कारों का क्षमन कर पाए। और इस सूत्र में उसको काफी सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं निखिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले थोड़ा पाली में पढ़ें, फिर इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि पाली के शब्द भी ऐसे हैं जो हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएंगे, और उसके माध्यम से यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट मोर बेटर, बिकॉज कई जगह पे ट्रांसलेशन थोड़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं बैठता, इसलिए मैंने कहा कि वो भी पढ़ लें। मैंने एक आध जगह पे ब्रैकेट में कुछ लिख भी दिया था इंग्लिश ट्रांसलेशन के, लेकिन मुझे लगा कि सारे में लिखना वो शायद रेस्पेक्टफुल नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, और पाली का भी आप देखेंगे तो साथ साथ क्लियर हो जाएगा। सम्मस्य का शब्द का अर्थ एग्जैक्टली क्लियर नहीं है अलग अलग जगह, बट बेसिकली इट इज नोइंग अबाउट वन सेल्फ। तो भगवान जो यूज करते हैं अंतरंग सम्मसन, अंतरंग मतलब अपने अंदर जानो क्या हो रहा है। सो इट हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय समबडी एज एक्सप्लोरेशन, बट आई थॉट दिस वाज गुड। सेल्फ एग्जामिनेशन ट्रांसलेट किया था, तो मैंने उसमें इनर और जोड़ दिया, बिकॉज दिस वर्ड अंतरंग मीन्स इनर। इस तरह से it will become more clear exactly what exactly the Lord is telling us, advising us how to do the inner reflection. इसलिए मुझे लगा हम we are in the process of doing very intense work, तो इस तरह का सूत्र हमको और क्लैरिटी प्रदान करेगा। So, Nikhil, you can read it now. सम्मस्य सूत्र। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा कुरुषु विहरति
कम्मास धम्मं नाम कुरुनं निगमो तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेसि भिक्खवोति वदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवा एतद्वोच सम्मसत्थनो तुम्हें भिक्खवे अन्तरं सम्मस्सन्ति एवं बुद्धे अयतरो भिक्खु भगवन्तं एतद्वोच अहं को भन्ते सम्मस्सामि अन्तरं Please read सम्मसन्ति। it. इसको पैराग्राफ वाइज पढ़िए ना, Okay. थोड़ा Thus छोटा have I heard. छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ के ट्रांसलेशन करिए ताकि वो रिलेट कर सके। ठीक है सर। Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was dwelling among the Kurus when there was a town of the Kurus named Kammasadhamma. There the Blessed One addressed the bhikkhus as bhikkhus. Venerable sir, those bhikkhus replied, the Blessed One said this. Sammasatno tume bhikkhave antarang sammasanti. Do you engage in inner self-examination, bhikkhus? Evam buddhe anyataro bhikkhu bhagavantam etadvocha. Aham kho bhante sammasami antarang sammasanti. When this was said, one bhikkhu said to the Blessed One, Venerable sir, I engage in self-examination. तथा यथा कथं पंत्वं भिक्खु सम्मससि अंतरं सम्मसन्ति. How do you engage in inner self-examination, bhikkhu? अथ खो सो भिक्खु व्याकासी यथा सो भिक्खु व्याकासी नासो भिक्खु भगवतो चित्तं आराधेसि. The bhikkhu then explained, but the way he explained did not satisfy the Blessed One. एवं बुद्धे आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच. एतस्य भगवा कालो एतस्य सुगत कालो यं भगवा अन्तरं सम्मस्सं भासेय भगवतो सुत्वा भिक्खु धारिस्सन्तीति. तेन ह आनन्द सुनात् साधुकं मनसि करोथ भासिस्सामीति. एवं भन्तेति खोते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं. Then the Venerable Ananda said, now is the time for this Blessed One. Now is the time for this Fortunate One. Let the Blessed One explain inner self-examination. Having heard it from the Blessed One, the bhikkhus will remember it. Then listen and attend closely, Ananda. I will speak. Yes, Venerable sir, the bhikkhus replied. Bhagava etadvoch. The Blessed One said this. Id bhikkhave bhikkhu sammasamano sammasati antarang sammasang. यंको इदं अनेकविधं नानाप्रकारकं दुःखं लोके उत्पद्यते जरामरणम्. इदं को दुःखं किन्निदानं किं समुदयं किं जातिकं किं पवनं किस्मिन् सति जरामरणं होति के अस्मिन् किस्मिन् असति जरामरणं न होति इति. Here bhikkhus, when engaged in self-examination, a bhikkhu reflect thus the many diverse kinds of suffering that arise in the world headed by aging and death. What is the source of this suffering? What is its origin? From what is it born and produced? When what exists does aging and death come to be? When what does not exist does aging and death not come to be? सो समानो एवं जानाति यंखो इदं अनेकविधं नानाप्रकारकं दुःखं लोके उपपज्यति जरामरणम्. इदं को दुःखं उपदिनिधानं उपदिसमुदयं उपदिजातिकं उपदीपवनं
उपदस्मिन् सति जरा मरणं होति उपदस्मिन् असति जरा मरणं न होति इति. As he reflects, he understands thus the many diverse kinds of suffering that arise in the world headed by aging and death. This suffering has acquisition, attachment, identity as its source. Acquisition as its origin, it is born and produced from acquisition. When there is acquisition, aging and death comes to be. When there is no acquisition, attachment, identity, aging and death does not come to be. Just 1 minute. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एक्विजिशन है वो ट्रांसलेशन है उपाधि का, उपाधि. So this is seen to be the immediate cause for being born, and क्योंकि आइडेंटिटी बनेगी तो उसके साथ जन्म, नया जन्म होगा. तो उपाधि का ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो शब्द का मतलब होता है वो जिसके कारण कि अगला जन्म मिले. पाली में इस तरह से ट्रांसलेट किया है, बट अगर हम इसको हिंदी के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसका मतलब बेसिकली है उपाधि, जिसका मतलब है कि अपने आप को आइडेंटिफाई किस लिए करते हैं. तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में अटैचमेंट, यूजुअली बाकी जगह में आसक्ति शब्द लिखा हुआ है, और आइडेंटिटी. सो जस्ट टू सी दैट जब हमारे चित्त में कोई भी आसक्ति है, कोई भी आइडेंटिटी बनी हुई है जिसके कारण हम को आइडेंटिफाई करते हैं, तो देन एजिंग एंड डेथ विल कम. मतलब बार बार अगला जन्म होगा. एजिंग एंड डेथ हियर इंप्लाइज नेक्स्ट बर्थ विल हैपन. या प्लीज. सो जरा मरणं च पजानाति जरामरणं समुदयं च पजानाति जरामरणनिरोधं च पजानाति. या च जरामरणनिरोधा सा रुक्मगामिनी प्रतिपदा तं च पजानाति. तथा पटिपन्नो चाहोति अनुब्रह्मचारी अयं उच्यते विक्खवे भिक्खु सब्बसो सम्मा दुःखखाय अत्पटिपन्नो जरामरणनिरोधाय. He understands aging and death, its origin, its cessation, and the way leading on, that is, in conformity with its cessation. He practices in that way and conducts himself accordingly. This is called a bhikkhu who is practicing for utterly complete destruction of suffering, for the cessation of aging and death. अथा परं सम्मसमानो सम्मसति अन्तरं सम्मस्सं उपधिपनायं किनिधानो किं समुदयो किं जातिको किं पबवो किस्मिन् सति उपधि होति किस्मिन् असति उपधि न होति इति. Then engaging further in self-examination, he reflects thus: what is the source of this acquisition, attachment, identity? What is its origin? From what is it born and produced? When what exists, does acquisition comes to be? When what is absent, does acquisition, attachment, identity not come to be? सो समानो एवं जानाति उपधि तन्हा निदानो तन्हा समुदयो तन्हा जातिको तन्हा पवभो तन्हाय सति उपधि होति तन्हाय असति उपधि न होति इति. As he reflects, he understands thus acquisition, attachment, identity has craving as its source, craving as its origin. It is born and produced from craving. When there is craving, acquisition comes to be. When there is no craving, acquisition, attachment, identity does not come to be. You can see here between tanha and rebirth, factor of upadhi is introduced. We can roughly put it as in our praticca samutpad we have
vedana pachya tanha, tanha pachya upadana, upadana pachya bhava, bhava pachya jati. So upadhi is somewhere the interlink between jati and tanha, जो बीच के दो फैक्टर्स हैं. बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग, और हमारी किसी चीज के प्रति आसक्ति है कुछ, उस तरह उस सेंस में इसको यूज किया जाता है इस शब्द को. जी. सो उपधिं च पजानाति उपधि समुदयं च पजानाति उपधि निरोधं च पजानाति या च उपधि निरोध सा रूपगामिनी प्रतिपदा तंच पजानाति तथा प्रतिपन्नो चाहोति अनुधम्मचारी अयं उच्यते भिक्खवे भिक्खु सब्बस्सो सम्मा दुःखखयाय प्रतिपन्नो उपधि निरोधाय. He understands acquisition, attachment, identity, its origin, its cessation, and the way leading on that is in conformity with its cessation. He practices in that way and conducts himself accordingly. This is called a bhikkhu who is practicing for the utterly complete destruction of suffering, for the cessation of acquisition, attachment, identity. तथा परं सम्मत्समानो सम्मसति अन्तरं सम्मत्सं तन्हापनायं कथ उपज्यमाना उपज्यति कथ निविस्यमाना निविशति इति. Then engaging further in self-examination, he reflects thus: when this craving arises, where does it arise? When it is settles down, upon what does it settle? सो समानो एवं जानाति यं खो लोके प्रियरूपं सातरूपं एत्येषा तन्हा uppajjamana uppajjati eth nivisamana nivisati किंच लोके प्रियरूपं सातरूपं चक्षुं लोके प्रियरूपं सातरूपं एत्येषा तन्हा uppajjamana uppajjati eth nivisamana nivisati. As he reflects, he understands thus: whatever in the world has a pleasant and agreeable nature, it is here that this craving arises when it arises. It is here that it settles when it settles down. And what in the world has a pleasant and agreeable nature? The eye has a pleasant and agreeable nature in the world. It is here that this craving arises. When it arises, it is here that it settles when it settles down. सोतं लोके प्रियरूपं सातरूपं ते घानं लोके प्रियरूपं सातरूपं जिह्वालोके प्रियरूपं सातरूपं कायालोके प्रियरूपं सातरूपं मनोलोके प्रियरूपं सातरूपं एत्येषा तन्हा uppajjamana uppajjati एत्यनिवसमाना निवसति. So too the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind have a pleasant and agreeable nature. It is here that this craving arises. When it arises, it is here that it settles when it settles down. ये केचिदिक्खवे अतीतमदधानं समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तं विच्चितो अददुःखु अद अददखुं सुखतो अददखुं अत्ततो अददखुं आरोग्यतो अददखुं क्षेमतो अददखुं ते तन्हं बद्धेषु ये तन्हं बद्धेषु ते उपधिं बद्धेषु ये उपधिं बद्धेषु ते दुःखं बद्धेषु ये दुःखं बद्धेषु ते न परिमुञ्चसु जात्या जराय मरणेन शोके हि परिदेवे हि दुःखे हि दोमनस्से हि उपायासे हि न परिमुञ्चन्सु दुःख स्माति वदामि. Bhikkhus, whatever ascetics and Brahmins in the past regarded that in the world with a pleasant and agreeable nature, as permanent, as happiness, as self, as healthy, as secure, they nurtured craving. In nurturing craving, they nurtured acquisition, attachment, identity.
In nurturing acquisition, attachment, identity, they nurtured suffering. In nurturing suffering, they were not freed from birth, aging, and death. They were not freed from sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. They were not freed from suffering, I say. हमें पिछला थोड़ा पिछले वाला ले जाएंगे पैराग्राफ में. I would like to say a few words about it. थैंक यू. आप देखेंगे यहाँ पे जो उपाधि थी उसका कारण, उसका जो निदान है, उसका जो कारण है वो बताया गया तृष्णा को. और फिर पूछा कि कहाँ पे तृष्णा जागती है. सो यू कैन सी इट्स एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट जिसपे हम महासती पठान सूत्र से काम कर रहे थे कि भाई चक्षु लोक पे जागेगी, फिर श्रोत पे, फिर घान पे, जिह्वा पे, काया पे, और मन के इंटरेक्शन पे, मनोलोक है. तो आजकल जो हम कर रहे हैं वो मनोलोके प्रिय रूपम सात रूपम एथे सतनः उपजमाना उपजति. हमारे मन में जो थॉट है, जो हमको विचार है, जो भी व्यू है और आइडिया है, those things which are dear to us, agreeable to us, उनके प्रति तृष्णा जागती है. This is what we are investigating now, and these words are exactly the same as in the Mahasati Pathan जो हमने शुरू में किया था, 10 different categories and of 6 types of cravings. So here again same paradigm is reflected कि कहाँ पे तृष्णा जागती है, क्या स्कोप है उसका. That complete scope is explained in the same manner as we have been doing. ठीक, चलिए. ये हि केचिभिक्खवे अनागतम् अदधानं शमना वा ब्राह्मणा वा यं लोकेऽपि रूपं सातरूपं तं निश्चितो दक्षिस्सन्ति नापरिमुच्यन्ति दुःखस्माति वदामि. Whatever ascetics and Brahmins in the future will regard that in the world with a pleasant and agreeable nature as permanent, they will not freed from suffering, I say. ये हि केचिभिक्खवे एतर्हि सम्ना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तं निश्चितो पश्यन्ति न परिमुच्यन्ति दुःखस्माति वदामि. Whatever ascetics and Brahmins at present regard that in the world with their pleasant and agreeable nature as permanent, they are not free from suffering, I say. स यथापि भिक्खवे आपानीयकंसो वर्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो शोचाको विषेण संसक्तो अथ पुरुषो आगच्छेय धम्माभितप्तो धम्मपरेतो क्विलन्तो त्रसितो पिपासितो तमेनं एवं वदेयुं अयं ते अम्भो पुरुष आपाने कंसो वर्णसम्पन्नो गन्धसम्पन्नो रससम्पन्नो शोचाको विषेण संसक्तो सचे आकाङ्क्षसि पिबतो हि को तं छादेशति वह्नेनपि गन्धेनपि रसेनपि पीत्वा चापन् ततो निदानं मरणं वा निगच्छसि मरणमन्तं वा दुःखम् इति. सोतं आपानीयकं सहसा अपतिसङ्खा पिबेय न पति निःसज्जय सो ततो निदानं मरणं वा निगच्छेय मरणमन्तं वा दुःखम्. Suppose, bhikkhus, there was a bronze cup of a beverage having a fine color, aroma, and taste, but it was mixed with poison. Then a man would come along, oppressed and afflicted by the heat, tired, parched, and thirsty. They would tell him, "Good man, this beverage in the bronze cup has a fine color, aroma, and taste, but it is mixed with poison. Drink it if you wish."
If you drink it, it will gratify you with its color, aroma, and taste. But by drinking it, you will meet death or deadly suffering. Suddenly, without reflecting, he would drink the beverage, he would not reject it, and thereby he would meet death or deadly suffering. एवमेव को भिक्खवे ये हि केचि अतीतमध्यानं सम्ना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं ते अनागतं अदधानं ते एतदहि सम्ना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तं निच्चितो पश्यन्ति सुखितो पश्यन्ति अत्यक्तो पश्यन्ति आरोग्यतो पश्यन्ति खेमितो पश्यन्ति ते तन्हं वड्ढन्ति ये तन्हं वर्धन्ति न परिमुच्यन्ति दुःखस्माति वदामि. So too, Bhikkhu, whenever ascetics and Brahmins in the past, in the future, at present regard that in the world with a pleasant and agreeable nature, as permanent, as happiness, as self, as healthy, as secure, they are nurturing craving. In nurturing craving, they are not free from suffering, I say. In the simile is pretty काफी स्ट्रॉन्ग सिम्बली है. ये देखिए उसमें शब्द भी बड़े इंटरेस्टिंग यूज किए गए हैं. आप देखेंगे कि वो जो किसी सुंदर से पॉट के अंदर कोई बेवरेज है, और वो कह रहे हैं उस बेवरेज कप भी बहुत सुंदर है, बेवरेज का कलर भी बहुत सुंदर है, उसका फ्रेग्रेंस अरोमा भी बहुत सुंदर है, टेस्ट भी बहुत सुंदर. मतलब हर एक इंद्रिय के द्वार, तीन इंद्रिय के द्वार इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे कि ये सब बहुत सुंदर हैं. तो अगर कोई भिक्षु अगर संसार के अंदर इस तरह की चीजों में सुंदरता देख के उसके प्रति राग जगाता है, तृष्णा जगाता है, तो it is like drinking poison ultimately. Poison in the sense that it will send him to again another aging and death phenomena, which means another life he will ever take. So that's the kind of strong analogy the Buddha is giving here for us to reflect upon as the problem which arises because of tanha at each sense door. तीन तो इन्होंने गिना दिए, बाकी बताएगा. You can see it applies to each sense door. तो अगर हम संसार को प्लेजेंट, एग्रीएबल, परमानेंट, सुख का कारण, मैं मेरा, स्वास्थ्य का कारण, हमको सेफ्टी देगा, सेफ्टी का कारण मानते हैं इस संसार के अंदर ही, तो हम क्रेविंग को पकड़े हुए हैं और उसके कारण फिर उपाधि और अगला जन्म हुआ. इस तरह से भगवान इसको प्रेजेंट करते हैं. These are obviously reflections which we do once and understand thoroughly, and then we are practicing accordingly. Please go ahead. So, yeah, next पढ़ा यहाँ से पढ़ना था मुझे. ये पढ़ लिया. So too भिक्षुस, ये तो पढ़ लिया. ये वो जैसे वो है वैसे ही वो भिक्षु हैं जो कि इसको ऐसा मानते हैं, तो वो भी सफरिंग से फ्री नहीं होंगे. तो वो उस बेवरेज में जो मिला हुआ है पॉइजन, उसी तरह ये सुंदर लगते हैं हमको, प्रिय रूपम साध रूपम, प्रिय भी लगते हैं और एग्रीएबल भी लगते हैं, बट उनमें पॉइजन छिपा हुआ है जो हमको जन्म मरण के चक्र में फिर ले जाएगा. So now you start from here. ये चाखो केचि भिक्खवे अतीतम अदधानं सम्ना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तं अनिच्चितो अददुःखं दुःखतो अददुःखं अनर्थतो अददुःखं रोगतो अददुःखं भयतो अददुःखं ते तन्हं पजहिंसु ते तन्हं ये तन्हं पजहिंसु ते उपधिं पजहिंसु ये उपधिं पजहिंसु ते दुःखं पजहिंसु
ये दुःखं पजहिंसु ते परिमुञ्चिन्सु जात्या जराय मरणेन शोके हि परिदेवे हि दुःखे हि भोमनसे हि पायासे हि परिमुञ्चिन्सु दुःखस्माति वदामि। Now he is भिक्षु describing the other side of it. अभी तक तो कहा उन भिक्षुओं के बारे में जो संसार के प्रति अटैचमेंट रखते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी द ट्रू करेक्टरिस्टिक। यहाँ उन भिक्षुओं की बात हो रही है, पास्ट की, फिर प्रेजेंट की, फ्यूचर की होगी, फिर प्रेजेंट की। जिन भिक्षुओं ने ये तो माना कि ये संसार जो है प्लेजेंट लगता है, एग्रीएबल लगता है, लेकिन वो जानते हैं वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, और उसके सिवा और भी ऐड कर दिया रोग की तरह है, भय भय देने वाला है, रोग तो भय तो उस तरह से जिन्होंने दुख को देखा तो वो तन्हा को पजहिंसु, उन्होंने तन्हा का त्याग कर दिया। और फिर तन्हा त्याग कर दिया तो उपाधि त्याग कर दी, उपाधि त्याग हो गई तो दुख से मुक्ति हो गई। दिस हाउ द लॉजिक इज बीइंग पुट फोर्थ। ठीक है बेटा, करो आगे बेटा। Bhikkhus, whatever ascetics and Brahmins in the past regarded that in the world with a pleasant and agreeable nature, as impermanent, as suffering, as non-self, as a disease, as fearful, they abandon craving. In abandoning craving, they abandon acquisition, attachment, identity. In abandoning acquisition, attachment, identity, they abandon suffering. In abandoning suffering, they were freed from birth, aging, and death. They were freed from sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. They were freed from suffering, I say. येऽपि हि केचि भिक्खवे अनागतम् अदधानं समना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तम् अनिच्छितो दक्षिस्सन्ति दुःखितो दक्षिस्सन्ति अनर्थतो दक्षिस्सन्ति रोगतो दक्षिस्सन्ति भयतो दक्षिस्सन्ति ते तन्हं पजहिस्सन्ति ये तन्हं पजहिस्सन्ति ते परिमुञ्चिन्सन्ति दुःखस्माति वदामि। Whatever ascetics and Brahmins in the future will regard in the world with a pleasant and agreeable nature as impermanent, as suffering, as non-self, as a disease, as fearful, they will abandon craving. In abandoning craving, they will be freed from suffering, I say. येऽपि हि केचि भिक्खवे एतैर्हि समना वा ब्राह्मणा वा यं लोके प्रियरूपं सातरूपं तम् अनिच्छतो पश्यन्ति दुःखतो पश्यन्ति अनर्थतो पश्यन्ति रोगतो पश्यन्ति भयतो पश्यन्ति ते तन्हं पजहन्ति ये तन्हं पजहन्ति ते उपधिं परिमुच्यन्ति दुःखस्माति वदामि। Whatever ascetics and Brahmins at present regard that in the world with their pleasant and agreeable nature as impermanent, as suffering, as non-self, as a disease, as fearful, they are abandoning craving. In abandoning craving, they are free from suffering, I say. Yes, one comment I'll make. We should remember that lok actually means all the six senses. So it includes, the definition of loka is all the six senses. So we should remember that. Which means that in each of the senses, when we interact with the world, if anything seems pleasant and agreeable and where worth attraction, then we remember this is impermanent, dukkha, anatta, roga, bhaya, then tanha is dropped. Please go ahead. And the same analogy is now being used to indicate how a person who is aware of the danger within that drink, he will not take it. So that is used then to say, person who is aware of the danger in these sensory pleasures will not indulge in them. Sayyathapi bhikkhave आपानीय कंसो
वर्ण संपन्नो गंध संपन्नो रस संपन्नो सोचाखो विषेण संसक्तो अत्पुरुषो आगच्छेय धम्माभितत्तो धम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो तमेनं एवं वदेयं त्रियं ते अम्भो पुरुष आपानीय कंसो वर्ण संपन्नो गंध संपन्नो रस संपन्नो सोचाखो विषेण संसंतो सचे आकांक्षसी पिबतो हि को तं छादिष्यति वर्णेनपि गन्धेनपि रसेनपि पिबत्वा चापं ततो निदानं मरणं वा निगच्छसि मरणमन्तं वा दुःखम् अपि अथ को भिक्खवे तस्य पुरुषस्य एवमस्य सक्काखो मे अयं सुरा पिपासिता पानिनेय वा विनेतुं दधिमण्डकेन वा विनेतुं भट्टलोनिकाय वा विनेतुं दोढसोवीरिकेन वा विनेतुं न त्वेवाहं तं विपेयं यं मम अस्य दीर्घरत्नं हिताय सुखायापि सोतं आपानीय कंसं पटिसंखा न पिबेय पटिनिस्सच्चेय सो ततो निदानं न मरणं वा निगच्छेय मरणमन्तं वा दुःखम् Suppose bhikkhus, there was a bronze cup of a beverage having a fine color, aroma, and taste, but it was mixed with poison. Then a man would come along, oppressed and afflicted by the heat, tired, parched, and thirsty. They would tell him, "Good man, this beverage in the bronze cup has a fine color, aroma, and taste, but it is mixed with poison. Drink it if you wish. If you drink it, it will gratify you with its color, aroma, and taste, but by drinking it, you will meet death or deadly suffering." Then the man would think, "I can quench my thirst with water, whey, or porridge, or soup, but I should not drink that beverage, since to do so would lead to my harm and suffering for a long time." Having reflected, he would not drink the beverage, but would reject it, and thereby he would not meet death or deadly suffering. एवमेव को भिक्खवे ये हि केचि अतीतमदधानम् अनागतमदधानं ते एतर्हि समणा वा ब्राह्मणा वा यं लोकेऽपि रूपं सातरूपं तं अनिच्छतो पश्यन्ति दुःखतो पश्यन्ति अनर्थतो पश्यन्ति रोगतो पश्यन्ति भयतो पश्यन्ति ते तन्हं पजहन्ति ये तन्हं पजहन्ति ते उपधिं पजहन्ति ये उपधिं पजहन्ति ते दुःखं पजहन्ति ये दुःखं पजहन्ति ते परिमुच्यन्ति जात्या जराय मरणेन शोके हि परिदेवे हि दुःखे हि दोमनस्ये हि उपायासे हि परिमुच्यन्ति दुःखस्माति वदामीति. So too bhikkhus, whatever ascetics and brahmins in the past, in the future, at present regard that in the world with a pleasant and agreeable nature, as impermanent, as suffering, as non-self, as a disease, as fearful, they are abandoning craving. In abandoning craving, they abandon acquisition, attachment, identity. In abandoning acquisition, attachment, identity, they abandon suffering. In abandoning suffering, they are freed from birth, aging, and death. They are freed from sorrow, lamentation, pain, displeasure, and despair. They are freed from suffering, I say. Thank you. Thank you. You can now sit quietly and meditate for 30 minutes till 8:15. Reflect on this. I think we can verify that we are exactly following this or not, and we are taking steps in that direction. And then we come back to the our particular topic of focus at the moment, man and mano and dhamma interaction.
We can do silent meditation, silence our mind if necessary. और मन में उछल कूद हो रही हो तो उसको थोड़ी देर साइलेंस खुद ही कर लें और फिर रिफ्लेक्शन करें, and then we can sit and discuss if there is any need. 8:15 आप घंटी बजा दीजिए.
किसी को कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं फिलहाल। अभी सर का स्पीकर ऑफ है तो टिल देन सुशीला आंटी आप बता सकते हैं सर को। निखिल बोल रहा है। हाँ निखिल आंटी बोल मैं रहा है। हेलो, आप बोलो। निखिल बोल रहे बोलने के लिए, घंटी बज गई है, आप उठे नहीं हो। थैंक यू हाँ, आंटी। करो बात। Sorry, I didn't hear bell because the mic gets switched off. Are there any comments or sharing you want to do? जो हम कर रहे हैं उसके बारे में या जो आज सूत्र पढ़ा है उससे एक साधना का सारी साधना का फ्रेमवर्क जो हम फॉलो कर रहे हैं क्लियर हो जाता है। ये फ्रेमवर्क भी एक रिकमेंडेड फ्रेमवर्क है। आई थिंक इससे क्लियर तो शायद हो भी नहीं सकता, बहुत ही क्लियर है। Yes. This first time I found a sutta in which the Buddha is talking about how to, what is the reflection meaning. क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं, but we don't, we attribute it to our teachers, but we didn't realize कि it's very good to read this. That Buddha has also mentioned it exactly the same way. I vaguely remember having read this before, but probably it didn't have the same kind of impact as it had today. Yeah, maybe we may not be prepared to Right. receive it. Yeah. Thank you. हाँ जी, हाथ खड़ा किया, गेस्ट ने खामोश है। जी कहिए, प्लीज गो अहेड। Can't hear you. आई थिंक सर वो मिस्टेक से हो गया होगा। अच्छा, सूत्रा के लिए मैं जो हमारा एक स्मॉल ग्रुप है, क्लोज ग्रुप स्मॉल मेडिटेशन, उसमें तुम्हें ड्रॉप कर ही दूंगा। साथ में प्रकाश शाह जी को मैंने लिख दिया है, वो मुझे अपना नंबर भेज दें तो मैं उसमें भी भेज ठीक। दूंगा। So we can read Samparitta. सर लेकिन ये इस सूत्र में अगर हम कुछ टेक अवे कर पाए तो एक क्या टेक अवे ये नहीं है इसमें कि हमें संतोषी होना चाहिए,
क्योंकि उसमें उन्होंने बोला कि व्यक्ति बहुत परेशान है, संसार से प्यासा है और गर्मी से मारा है, तो अंत में बोलते हैं कि वो अपनी प्यास पानी से भी बुझा सकता था, दलिया खा सकता था, उसको इतना सब। सो क्या ये कहीं न कहीं हमें ये भी नहीं दिखा रहा है कि हम थोड़ा संतोष में चले जाएँ रादर देन pomp एंड शो में? मतलब क्योंकि एक तो होता है देखिए, जिसको हम बोलते हैं, आप बताते हो या हमारे इसमें लिखा है लिटरेचर में कि परासुख, है ना? जो अतीन्द्रिय सुख है या तो वो मिल जाए। इसमें अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, इसमें वो बोल रहे हैं कि ये प्यास तो मैं पानी से भी बुझा सकता था, मैं क्यों इतना तामझाम करूं? सो isn't it that it is about being content in life? Yeah, contentment is, of course, a very it's a wholesome quality of the mind. Definitely, contentment is God. One can interpret it in that manner also. But eventually, what is being said is that drinking of the fluid, of that drink, is equivalent to enjoying the various sense pleasures. We should see it in that light. So, and the analogy says that various sense pleasures are like poison. There's a hidden poison in them, in the sense that they bind us and then create a conditions for our future birth. तो इतना मुझे स्पष्ट दिखता है, ये बात कही जा रही है. सर लेकिन वो फिर वही मैं बोल रहा हूँ, अगर हम सेंस प्लेजर को शन कर देते हैं और हमें परासुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर बड़ा बड़ा ही बेचैनी वाली बात हो जाती है और व्यक्ति को समझ नहीं आता है कि अभी ये भी रोक दिया, वो भी रोक दिया. सो इसमें वो बोल रहा है कि व्यक्ति परेशान तो है, लेकिन सुख भी वो सेंस के माध्यम से ही ले रहा है, पानी पी रहा है, बस ये है कि रेगुलेटेड, राइट? Yeah, of course. It is not a question of shunning anything. It's not, वहाँ पे कहीं shunning की बात नहीं है. He knows it is impermanent. He knows it is unsatisfactory. He knows it is not personal. It's not substantial. And he knows that indulging in that is like a disease where you indulge in it. And he sees the danger in it. Those are the words used. Na? So sense pleasures में आस्वादन के साथ आदि ना हो, वो dimension be involved है. So basically it is that we जितना भी हमें नीड है भोजन की, पानी की, कपड़ों की, other things, yes, we use these as on need basis rather than on want basis. So you can say we are contented with fulfillment of our needs, which are the bodily needs. Yes. Yes. Correct. जी. सक्षम जी, आप पूछ लीजिए. हाय सर, सॉरी मैं ही गेस्ट था. मैंने एक्चुअली टीवी से ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें माइक ऑन करके भी बोल नहीं पा रहा था. बट आज ये जो ब्रॉन्ज कप वाला मेटाफर था, इससे रिफ्लेक्ट करके जो मैंने कुछ थोड़ा अलग फील किया, बेसिकली ये चीज़ की यूजुअली क्या होता है कि व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग, बेसिकली ऑन माय क्रेविंग्स, तो पहले क्लैरिटी आती है और फिर उस क्लैरिटी के बेस पे एक उसको लेटिंग गो आता है एंड बेसिकली रिलीज आता है एक सॉर्ट ऑफ. बट आज मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे दिन में काफी सारे थॉट्स चल रहे थे, कैरियर और इन सब चीजों को लेकर ग्रीड चल रहा था. तो ये मेटाफर यूज करके समहाउ पहले रिलीज आया, वो पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो सॉर्ट ऑफ पॉइजन है, या फिर हर्ट ही करेगा बाद में, जो भी चीज में अटैच होके बैठा हूँ और इतना ज्यादा चाह रहा हूँ. और पहले रिलीज हुआ और फिर धीरे धीरे उसके बारे में क्लैरिटी भी आना शुरू हुई.
तो that is something different that I felt about this today. Good, good. It all depends on what strikes from an example. किसी को कुछ strike करता है और वो personal mental state पे भी depend करता है ना. इस समय मेरी mental state क्या है, उसके साथ कौन सी चीज मेरे को बिल्कुल उपयुक्त लगती है, appropriate लगती है. So it's good you are able to reflect well. Very good. थैंक यू सर. और सर एक और चीज मेरे को अभी पिछले डिस्कशन से बड़ी अच्छी लगी कि मतलब कहीं पे भी किसी चीज को इस डिस्कोर्स में मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में शन नहीं किया है कि किसी चीज को बुरा मतलब ऐसे बुरा नहीं बोला है, बट पॉइजन को बस पॉइजन बोला है. फिर आगे जो जिस व्यक्ति को बताया है कि वो पॉइजन है उसकी मर्जी है. कि मतलब अगर वो विदाउट रिफ्लेक्शन जंप कर देता है उस पर, तो वो भी हम भी कई बार करते हैं. अगर वो रिफ्लेक्ट करता है तो फिर मतलब इसमें फिर कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है फिर. Yeah. Basically, the issue is that we don't fall in the trap of pleasure and forget its consequences, negative consequences. किसी भी pleasure के आस्वादन, जैसे अपने वो पैराडाइम यूज किया था, आस्वादन है, उसमें अच्छा लगता है, बट उस आस्वादन के साथ में आदिनव भी है, डेंजर है, शॉर्टकमिंग है. तो अगर हम उसकी शॉर्टकमिंग को और उसके शॉर्टकमिंग के कारण भय को जगा के रखेंगे, होलसम काइंड ऑफ फियर, देन we'll not indulge in that beyond the need. भोजन करना है तो उतना ही करेंगे जितना आवश्यक है. चीवर पे कपड़ा लेना है तो उतना ही लेंगे जितना आवश्यक है. एंड वी डोंट allow that worldly attractions to become so powerful कि हमारा सारा ध्यान उसी में निकल जाए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. And we are spending all the time in that. Then obviously we are creating conditions for future rebirths, because तृष्णा जगा रहे हैं तो अगला बर्थ के कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं. यस सर. थैंक यू. Thank you very much. Thank you. Yes, Nikhil, we can now do the chant. कितना बज गया? अच्छा 8:30 हो गया. And we can request Bhanteji is there, I think. So we can request Bhanteji to give his concluding blessings. मुझे लग रहा है आज हम कंक्लूड करें इस भाव से. हम एक तो एक कृतज्ञता रख सकते हैं अपने मन में कि हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं जो कि हमें ऐसे ऐसे सुत ऐसी ऐसी टीचिंग्स भगवान बुद्ध की हमारे सामने लाके रखते हैं, जो हमें जैसे सक्षम ने बताया, जो हमें उस समय बहुत मदद करती हैं, या दे सीम टू बी एबल टू हेल्प अस मेक अ ब्रेक थ्रू. तो एक तरीके से ये हमारी गुड फॉर्चून है, हमारे कार्मिक एंसेस्टर्स का हमारे लिए गिफ्ट है, अगर हम ऐसे देखना चाहें तो. तो एक इस चीज़ के लिए हम कृतज्ञता रख सकते हैं एज वी क्लोज. और दूसरा, जैसा सुबह भी हम बात कर रहे थे, ऐसे भी हम कामना रखें कि ये जो रिच प्रोफाउंड टीचिंग्स हमारे सामने आ रही हैं, हमारी भी ऐसी क्षमता, खासकर कि माइंड की विभिन्न कैपेसिटीज़ बने, पेशेंस बने और एनर्जी हम में हो, जिससे कि ये जो प्रोफाउंड टीचिंग्स हमारे सामने आ रही हैं, जिसके प्रति हम कृतज्ञता रख रहे हैं, उनको हम धारण भी कर सकें. सो आई हैव फाउंड पर्सनली कि जब मैं इस तरह से इन बातों को मन में रखता हूँ तो मेरी अपनी जो क्षमता है, बल है, मुझे लगता है वो मुझे बढ़ता है उससे. सो आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है, देन I'd encourage you to also similarly hold these emotions in mind as we close.
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति आवाज थोड़ी नहीं आ भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। जी प्रणाम भंते जी के लिए भी प्रथम प्रणाम, द्वितीय प्रणाम, तृतीय प्रणाम। ओके, शुभरात्रि। Thank you very much. Thank you, sir. Namaskar. Thank you. Very much, sir.